Hello everyone, a warm welcome to one and all. In this video, we are going to discuss a fresh topic of physics, which is pressure. It is also very important. So, let's start. Before moving deep into pressure, let's discuss an activity. Let me zoom out this one. So, take an activity when you are holding a sharpened pencil between the index fingers of your both hand, and you will going to press it from both hands. So what you are going to observe in this case, on which finger you will have a deeper mark. So you will be having a deeper mark on the index finger which is in contact with the sharper end of the pencil, यानी जिस फिंगर पर आपका जो शॉर्पन एंड है पेंसिल का वो होगा उस फिंगर पर हम डीपर मार्क एक्सपीरियंस करेंगे, वाइल जो बैक साइड है पेंसिल की जिस फिंगर पे होगा उस फिंगर पर ज़्यादा फोर्स का इफेक्ट नहीं होगा. Why this all happens? This is because when the force acts on a smaller area, the force is greater. जब फोर्स एक कम सरफेस एरिया पे लगाया जाता है तो उस समय हमारा फोर्स ज़्यादा होता है, यानी जब एरिया ऑफ कांटेक्ट फोर्स का और जिस पर फोर्स लग रहा है उसका कम होगा, उस केस में आपका फोर्स ज़्यादा होगा. जैसे कि इस केस में जब एरिया ऑफ कांटेक्ट हमारा लेस है तो हमारा फोर्स ज़्यादा होगा. The smaller the area over which the force acts, the greater is the effect of the force. While इस फिंगर में जहाँ एरिया ऑफ कांटेक्ट फर्स्ट केस वाले से ज़्यादा है उस केस में हम उतने ज़्यादा फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे. Let's move to different activity to prove this experiment. In this, we have taken a beaker full of sand and we are going to insert the brick first in a horizontal manner and then in a vertical manner as shown in these figures. In first figure, it has been shown that when we have inserted it with the horizontal side, so we will going to measure the depression, and when we are going to insert it vertically, then also we are going to measure the depression. And you will observe then that when the brick is inserted in a vertical manner, the depression formed is more than that in the case where we have inserted the brick in a horizontal manner. Means जब हमने ब्रिक को हॉरिजॉन्टल तरीके से रखा तो उस समय डिप्रेशन जो बना वो कम था एज कंपैरिजन टू उस डिप्रेशन से जब हमने ब्रिक को वर्टिकली रखा. तो ऐसा क्यों? इससे प्रूव होता है कि जितना हमारा फोर्स यानी एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होगा उतना ही ज़्यादा हमारा फोर्स होगा, वाइल जब एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगा और जब एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होगा तो हमारा फोर्स ज़्यादा होगा. So by these activities we have proved that the magnitude of force acting on the surface depends the force on a surface means एक सरफेस पर कितना फोर्स लगाया जा रहा है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है. सबसे पहले कितनी क्वांटिटी हम फोर्स की लगा रहे हैं, मतलब कितना फोर्स हम लगा रहे हैं. दूसरा, in which direction we are applying or inserting the force. Third, the area of surface over which the force is applied. So, let's move to the definition of pressure. Pressure is the force acting on a unit surface area. यानी प्रेशर वो फोर्स है जो एक सरफेस एरिया पर लगाया जा रहा है. Pressure is used to find the effect of the force on a surface and is calculated by dividing the force by area of the surface. Pressure इसलिए यूज़ किया जाता है कि वो इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स को उस सरफेस एरिया पर
उस सरफेस एरिया पर कितना फोर्स लगा है, इसलिए हम उसको मेज़र कर सकें, इसलिए हम प्रेशर यूज़ करते हैं. सो व्हाट इज़ प्रेशर? प्रेशर इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट सरफेस एरिया. और जनरली इस केस में हम जो फोर्स लगाते हैं वो परपेंडिकुलर होता है, यानी वर्टिकल होता है. व्हाट इज़ परपेंडिकुलर? मीन्स व्हेन अ लाइन with the base is forming right angle, means 90 degree angle, then we tell that particular thing is as a perpendicular line, or that line is a perpendicular line. So इस केस में हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स लगाया जाता है, तो इसलिए उस फोर्स को, उस एक पर्टिकुलर फोर्स को हम थ्रस्ट कहते हैं. इसलिए इट इज़ द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया. What is pressure? It is the force acting on a unit area of a surface, means it is the thrust per unit area. So what is the formula? Pressure is equal to thrust upon area. SI unit of pressure. What is the SI unit of thrust? Yani force, Newton, while area is measured into meter square. So Newton per meter square is equal to Pascal. So the pressure, the SI unit of pressure is 1 Pascal. So it is written in this way: PA, P with the uppercase, A with the lowercase. Thus 1 Pascal is defined as the pressure exerted by force or thrust of 1 Newton on an area of 1 square meter. So I hope you understand what is pressure. जो फोर्स किसी भी यूनिट सरफेस एरिया पर परपेंडिकुलरली लगाया जा रहा है, उस फोर्स को हम प्रेशर कहते हैं. ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है? पास्कल, जो कि कैसे बनी है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या कहते हैं? पास्कल. लेट्स मूव टू दीज नो योर साइंटिस्ट. Blaise Pascal was a French mathematician, physicist, inventor, writer and philosopher. Pascal's earliest work was in natural and applied sciences, where he made important contributions to the study of fluids and clarified the concepts of pressure and vacuum. What is vacuum, children? जहाँ पर एटमॉस्फेयर यानी एयर की प्रेजेंस ना हो, उस एरिया को हम वैक्यूम कहते हैं. जैसे कि मून पर वी से दैट मून डज नॉट हैव ऑक्सीजन. मून पर ऑक्सीजन और वाटर दोनों ही नहीं है, इसलिए वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती. तो वहाँ पर वैक्यूम है, यानी जहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं होता वहाँ वैक्यूम होता है. His accomplishments include mathematical theories that are still in use. These are instances where animals have adapted themselves based on pressure they exert when they move. For example, camels have very broad feet. This increases the area of contact with the sand, and hence camels exert less pressure on the sand and are able to easily walk in a desert. So the pressure and the area of contact यानी area इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर लगाया जाएगा उतना ही कम एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा. मतलब जब एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होगा तो उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगेगा. तो इसी कारण जो कैमल्स के फीट होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, जिससे वो एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा बना पाएँ, जिससे उन्हें वॉक करने में जो प्रेशर लगेगा यानी फोर्स लगेगा वो कम हो जाएगा. Now let's discuss the applications of pressure in our daily life. Why we are using, or what is the use of pressure in our daily life? First, all cutting and piercing tools such as knives, scissors, needles and saws, pins, axes and blades have sharp edges to reduce the area of contact. Hence, they exert great pressure and have comparatively less force. So what does it mean? जो हमारे scissors होते हैं, जो needles होती हैं,
उनका ब्लेड्स शार्प एजेस के होते हैं, जिससे वो एरिया ऑफ कांटेक्ट को रिड्यूस कर सकें, जिस वजह से जो प्रेशर लगेगा वो ग्रेट होगा, बिकॉज द प्रेशर एंड द एरिया आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. स्कूल बैग्स एंड ट्रेवल बैग्स हैव ब्रॉड बेल्ट्स और स्ट्रैप्स, जिससे आप अपने बैग को होल्ड करते हो. वो स्ट्रैप्स और वो ब्रॉड बेल्ट्स आपके जो होते हैं वो वाइड होते हैं. वाई? सो दैट टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन द हैंड्स. जितना ज़्यादा एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट होगा, मीन्स जितना ज़्यादा वो ब्रॉड होंगे, उतना कम प्रेशर आप पर होगा उसे उठाने का. Skiers use flat and long skis to slide on the snow, because larger the area of contact, lesser is the pressure on the snow. Lorries and trucks have broad and double wheels. This increases the area of contact with the ground and hence reduces the pressure exerted on the ground. War tanks have move on broad chains called caterpillar tracks, which cover the wheels. This considerably increases the area of contact with the ground and hence reduces the pressure on the ground. Because of these, tanks can even move on soft, wet grounds without sinking. So, I hope you all are able to understand what is written over here. The concept is only one, that if you will increase the surface area, the pressure exerted will be less, while if you will decrease the surface area, the pressure exerted will be more. So, in case you are seeing in this part that the area of contact is more, so the pressure exerted will be less, while the area of contact is less, the pressure exerted will be more. Let's move on to this part. The walls of dams are made wider near their foundations so that they can withstand the pressure of water, because the pressure of water increases with the depth. Children, this we are going to learn further on, where we are going to discuss the pressure inserted by the fluids, which means that the pressure of the water increases with the depth. किसी भी फ्लूइड का प्रेशर उसकी डेप्थ के साथ इंक्रीज होता रहता है, इसलिए जो वाइडर जो फाउंडेशंस होती हैं वो वाइडर बनाई जाती हैं, जिससे कि वो जो प्रेशर है पानी का उसको कंपैटिबल कर सकें, मतलब झेल सकें. It is easier to hammer a pointed nail into wood than a blunt nail, because the pointed nail has a small area of contact with the wood. This increases the pressure on the wood and hence the nail can easily penetrate it. The ending part of the nail, means the sharpened part of nail, is less in area of contact. So, that is why with the more pressure it can exerted into the wooden piece. So, hereby we have come to end of this chapter. Rest of the part we are going to do in the further on next videos. So, we have done with the basic of pressure, pressure by fluids and pressure by gases. Will be going to discuss in further few more videos. So, let us summarize what we have done till yet. First, the force acting on a unit area of surface is called pressure. The perpendicular force acting on a surface is called thrust. So, the pressure can also be defined as the thrust per unit area. If a given force is applied over a small area, it will exert greater pressure, which means the pressure and the area is inversely proportional. If force acting over a given area is increased, the pressure increase. So, pressure and force are directly proportional. If we will increase the force, the pressure will automatically increase. The SI unit of pressure is Pascal. 1 Pascal is defined as pressure exerted by a force of 1 Newton on 1 square meter of area. All cutting and piercing tools have sharp edges to reduce
the area of contact as that they exert great pressure with a minimum force. So hereby we have come to the end of this video, and I hope you have learnt what is the pressure.